हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्यम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती भगवान की जय। जग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग जोग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 49वां अध्याय को कल शुरू किए, जिसमें हम विचार कर रहे थे कि जो विवेकवान पुरुष होता है उसका महिमा गान कर रहे थे। वो कैसा दिखता है, कितना बड़ा दिखता है, उसका गुण का हम गान कर रहे थे कल। और उसके ऊपर हमारा कल का क्या विषय था आज चर्चा करने के लिए भूल गए? भगवान। हाँ, इंट्यूशन, जो ब्रेन और हार्ट में क्या अंतर है, हमारा चर्चा यही हो रहा था कि विवेकवान पुरुष का हृदय बड़ा बड़ा बहुत विशाल हृदय होता है। विशाल, उसका कोई सीमा नहीं रहता है। तो हृदय जब बड़ा होगा तो वो व्यवहार कैसे करेगा? और उसका दिमाग कैसे काम करेगा? दिमाग कहाँ रहता है, दिल कहाँ रहता है, हृदय कहाँ रहता है, इसके ऊपर हमारा कल विचार हो रहा था। उदार चरिता नाम तु
वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र जो लोग होते हैं उनका सारा संसार उनका कुटुंब परिवार करके वो मानते हैं। और सब अपना संबंधी, सब अपना नाता रिश्ता, इस प्रकार जैसे हम व्यवहार करते हैं अपने भाई बहन माँ बाप, इनके साथ हम जैसे व्यवहार करते हैं, वो विवेकवान पुरुष जो सबको अपना मानता है वो सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करेगा, मतलब अपना जैसे। इसी को उदारता कहते हैं। अगर मान लो मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ बढ़िया चीज़ कोई लाया, बैठ गए खा रहा हूँ, मेरे भैया आ गया, मेरे को बोलता भैया तुम अकेले खाता हो, मेरे को भी थोड़ा दो ना, मेरे को भी भूख लग रहा। तो क्या करूँगा मैं? नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोल सकता हूँ कहीं? लो 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 तुम भी खाओ, आ जाओ। तो मतलब जो कुछ मेरे लिए है वो दूसरों के लिए भी है, और सब मेरे ही हैं। सब रिश्ते नाते जो कोई भी है, जिनको जानता नहीं जानता, सब मेरे रिश्ते हैं। सारे संसार मेरे परिवार के सदस्य हैं, ऐसा वो सोचता है। सोच करके परिवार के सदस्य के साथ परिवार जन जैसे व्यवहार करते हैं ऐसा वो व्यवहार करेगा। मतलब निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, और तेरा मेरा भी नहीं। तेरा मेरा कहाँ होता है? जहाँ जहाँ है, हम मैं जहाँ हूँ मेरा, और तू जहाँ है तेरा। लेकिन ये कहाँ पर होता है? जहाँ एक लाइन खींच जाता है, सीमा का एक लाइन खींच जाता है, वहीं पर सीमा के इस तरफ मेरा है, सीमा के उस तरफ तुम्हारा है। सीमा के बिना हम तेरा मेरा नहीं मानते हैं। और वसुधैव कुटुम्बकम, उसका सारा संसार एक होता है, उसमें सीमा कहीं नहीं रहता, असीम हो जाता है, सीमा नहीं रहता है। सीमांकन करने से ही स्वार्थ का हम अनुभव करते हैं, इस तरफ मेरा है उस तरफ तेरा है। जब सीमा नहीं है, सीमा नहीं तो असीम। असीम मतलब सारा मेरा है, सब कुछ मैं हूँ अथवा मेरा है, मैं हूँ अथवा मेरा है। तो मैं जैसे मेरे साथ व्यवहार करता हूँ, मतलब मेरा हाथ में अगर कहीं कांटा घुस गया, पैर में कांटा घुस गया, तो हाथ तुरंत जा करके उस कांटा को निकाल देता है, और सारा शरीर उसमें सहयोग करते हैं। ऐसे ही जो विवेकवान पुरुष होगा, जिसका मन में सबके प्रति एक अपना भाव रहता है, अपनापना रहता है, तो फिर कहीं भी कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, उसमें वो अपनापना दिखाता है और उसमें वो भागीदारी निभाता है। इस प्रकार इसी को कहते हैं उदार चरित्र। उदार चरित्र बड़ापना, यही उसका महिमा है। तो ये महिमा ये मन का है या कुछ हम कहते हैं दिल का है, कोई कहता है उसका ये सोच का है, कोई कहता है उसका व्यवहार का ये महिमा है, बड़ापना है। तो ये है क्या चीज़? हम व्यवहार कैसे करते हैं, कर्म कैसे करते हैं, व्यवहार किससे करते हैं?
व्यवहार हम किससे किया करते हैं? We are discussing the same thing. Yesterday what we were discussing, the greatness, the glory of a discriminative person. How does he feel, how does he behave, and how does he react to the outside world. So it is seen such great people who have discriminative power, they will have equal vision and same equal behavior with anybody and everybody. The whole world becomes their family, and family, everybody is family member. So just as a person in the family behaves with the other person of the same family, the discriminative person behaves in that way. Means with love, affection, and oneness, and the whole world becomes his own family. Such a person is really rare to find, one who thinks for everyone. This is his greatness. And the little-minded people, they will think for their own selfish achievement, and they will not think for others. This is their limiting thoughts. They are little-minded people, small-hearted people. They have distinction, discrimination. Discrimination means they have the feeling of difference. It is mine and it is yours. That difference they have always in the mind. So they think for selfish achievement and they don't do anything for others. This is how their thoughts and their behavior is limited. And on the other hand, the opposite discriminative man will have similar, same vision, same behavior with everyone. So this is called greatness, and one who thinks for the own self, it is his narrow-mindedness or narrowness of his behavior, little-mindedness. So in this way we saw that the discriminative man accepts the whole world to be his own family and accordingly behaves okay. Now, whatever we do, whatever actions we perform, how it is the action, how is it done, how we do the action, that also we have seen previously. 2 days back we were discussing how an action is performed. We saw the whole world has to take part, and then only
an action can be performed, in that the whole world has to cooperate, but some has got more share, and some has got very little share in the performance. So, but everybody has to, whole world has to get together to perform an action. So, what we see, we have to engage our whole personality to perform an action. Whole personality, including the body, the 10 senses, and the prana, mind, intellect, and subconscious mind. Of course, the ego is always present. It has to be involved. And something we call heart. What is that heart? What is that heart? This is to be seen. If we say whole, total personality has to be engaged to perform an action, then heart also comes within it. So generally, what we say, of course, medically, according to medical science, when we dissect the body and display every part of it, we say some heart, which helps the pumping of blood to the whole body parts, isn't it? It will have 4 apartments, and in 2 apartments they receive, and other 2 apartments they supply blood, and purificatory process goes on. In this way, physically we know this is the heart. But it only activates the nerve system. And of course, prana helps to the heart to act. Or else, if prana is not there, prana means the energy pumping system. Pump. How much horsepower? So prana helps everywhere. And without prana, the mind will not work also. And we have got some other machine. What is that? Brain. We call brain. What is that brain? And what is that heart? As per as this subtle analysis, means it is not a medical gross analysis. When it is seen by this subtle eyes, analytical eyes of the yogis, which they can see more perfectly and more deeply, more subtle way than these medical doctors. They say this whole body get together to perform an action, whole body. So wherever may be the brain, or wherever may be the heart, or wherever, however the prana functions,
but they all have to get together. It is a process, changing process. And that's how the individual being is the model of the whole universe. If the whole universe get together to do an action, so also is with the individual being. If at all he does something, then whole personality has to take part. Or else the function is impossible. The action is impossible. Now, just as in some kingdom, the king will have some capital and he will have also small stations where the king goes and does something temporarily, but mainly he will be always in the capital. In the officers, also in some, you see, what we call क्या कहते हैं उसको, हाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और स्टेट असेंबली, नहीं और कुछ कहते ना उसको, गवर्नर का कुछ, अरे असेंबली नहीं और कुछ बोलते ना वो बिल्डिंग को, पार्लियामेंट बिल्डिंग और हाँ जी सेक्रेटेरिएट, और इसमें बड़ा जैसे स्टेट का हाँ विधानसभा, और भी कुछ है जहाँ सारे ऑफिस सब होते हैं। विधानसभा में तो ऑफिस नहीं होते हैं, सारे ऑफिस जहाँ जैसे भी होगा, जैसे कलेक्ट्रेट हुआ, where all the officers will be together and somewhere the head will be sitting, but yet the head can go to some branch offices, say post office, that is the best example. The head post office will be in the main city and the branch offices will be in small cities, isn't it? And the postmaster general will sit somewhere in the head office and the sub-officers, they will be sitting here and there. But everywhere the same action will be going on. Whether the general works or the minimum means the smallest peon or worker does something, it is office work. Work is going on. Everywhere the work goes on. So to run the government, everywhere everybody should take part, then only the government can work. Similarly, the body also, government body, this is government body, governing body. So all the parts of the body have to take part, then only we can do something. सारे शरीर का सारे अंग प्रत्यंग जब साथ नहीं देंगे तब कोई कर्म हम नहीं कर सकते हैं। वह दिल जहाँ पर हो,
दिमाग जहाँ पर हो, चाहे मस्तिष्क जहाँ हो, या हृदय कहीं भी हुआ, या हमारे हाथ पैर आँख कान नाक, या हमारे जो नर्व सिस्टम है, जो नाड़ियों का, नस नाड़ियों का जो जाल बिछा हुआ है, कुछ भी हो, सब इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अगर विशाल हृदय हम कहेंगे तो फिर क्या समझ में आएगा कौन काम कर रहा है? विशाल हृदय कहने से हम कुछ किसी अर्थ में कभी कुछ कह देते हैं जो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर विश्लेषण करके देखेंगे तो जिसको हम हार्ट कहेंगे उसी को ही दिमाग कहेंगे, उसी का सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, उसी का नाम दिमाग, उसी का नाम इंद्रियां, उसी का नाम है मन, उसी का सारे इकट्ठे होकर एक एक हिस्सा को, जैसे शरीर को एक हिस्सा को हम हाथ कहते हैं तो दूसरे हिस्सा को पैर कहते हैं, है तो शरीर है। ऐसे ही चाहे मन काम कर रहा है, चाहे प्राण काम कर रहा है, या इंद्रियां काम कर रहे हैं, सारा शरीर कर रहा है। होल टोटल बॉडी हैज टू टेक पार्ट, और एल्स not only the head can do anything, nor the heart can do anything. It is a process, but when we analyze, we see the subtlemost part is called heart. Subtlemost part. The central part is called heart. So we cannot exactly define how it is and what it is, because it is subtlemost, so it is very hard to define what is heart. Something we understand. Heart means we understand something which is central part of the body and which is the main functionary. Because of what? The whole body is whole and is able to do something. So that heart is the subtlemost part which is described as Anuraniyan, subtler than the subtlemost. It is beyond our imagination, yet we have some ideas about it. And that is called heart, subtler than the subtlemost. And generally for gross understanding, who are you? I am so and so. What do you think? When we don't say I am, we say I am. So the natural identification is somewhere natural. It is natural within everyone. So that we take as the heart central identity. I am. So it is somewhere here. It is not the physical heart. It is the center of the government. You see, governance. Yes. तो इसी को हम दिल कहते हैं, जिसको एग्जैक्टली कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दिमाग भी ऐसे ही है। दिमाग, if we take the brain also is something so complicated. Of course, physically we have come to know something from the
See, when from the doctors, when they dissect it and they go on seeing all the parts, minute parts of the brain by microscopes, somehow we come to understand something. But still, that also is so subtle, it is very hard to explain exactly what it is. Because you say the chitta, nobody has seen what is called chitta and what is subconscious mind. Mind is so difficult to understand, and subtler than the mind is intellect, and still subtler is ego and ever restless, and still subtler than all these is a chitta, which is called the subconscious mind, which is the storehouse of everything, all your impressions, not only of this life. It is the storehouse of innumerable lives before, from the time when we have started the journey of life. Since then, all these impressions, all the memories, history we can say, huh? Everything is recorded there. So how subtly it will be? And that works in the brain. We can say like this because whenever we think something, oh, I am not able to remember, we go to the head, not here. But when we show our identity to say something, I am here, I am here. This way we can say one headquarter is here and other, the central, you see, innermost chamber of the president will be here. But functioning will be here. But they are connected with each other, related with each other, every moment, every way, in all conditions. Or else they cannot work. And action means it is a process, it is not anything steadiness. Action cannot be stable. Action is a process. So the order should be passed from the president and then it should come to the assembly and the prime minister and all the ministries should they give their opinion, a positive opinion, and then the bodies, different lower bodies, they will be doing any action. So everybody has to be related and connected and cooperate. Then only any action can be done. इसी प्रकार जो हम कह रहे हैं उदार चरित्र मतलब ये सारा व्यवहार को इकट्ठा लेकर के हम समझेंगे। जो कुछ कर्म हम करते हैं वह अगर सारे समस्त जगत के लिए किया जाता है तो उसी को कहते हैं उदार चरित्र, मतलब विशाल हृदय वाला अथवा बड़ा सोच वाला भी कह सकते हैं। सोचने के लिए तो दिमाग मतलब मस्तिष्क में मतलब इतने सब
मस्तिष्क का बनावटी कैसे मालूम? उसमें उस मतलब प्लेन सरफेस नहीं मस्तिष्क में. The brain is not a plain area. It is abnormal construction. It is not plain. So it is not, if you go there, you will fall down somewhere, some pitfalls are there, so many things are there. And how it functions, when it vibrates, then every functioning is nothing but vibratory system. So when the prana vibrates, it touches it just as the wind touches the water surface and we see the ripples or waves. Similarly, when the prana touches all those areas, then some vibrations are created which are called thought waves. And so many types, nobody can really calculate how many types and what types of waves are created. But some areas are there, similar waves will be made there. अगर थोड़ा इंक इधर गिर गया तो कहाँ फैलेगा? कुछ एरिया आसपास में फैलेगा ना. ऐसे ही जहाँ हवा अगर टच करता है दीवार को, जैसे वाइब्रेशन पैदा करेगा, जैसे स्पंदन पैदा करेगा, वो कुछ एरिया में सिमिलर रहेगा और दूसरे एरिया में दूसरे ढंग का हो जाएगा. जैसे मान लो तूफान आया, उस तरफ से वो पहाड़ में कितने पेड़ सब गिर गए, टूट फूट गए, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं हुआ. ऐसे ही समझो ब्रेन में कहीं जब प्राण का कहीं ज़्यादा प्रभाव हुआ तब फिर उस तरफ कुछ विशेष भावनाओं का पैदा हो जाता है और इसमें फिर बारंबारता के कारण कहीं उसमें कुछ खड्डे बन जाते हैं. जैसे पानी बार बार बहने से पत्थर में भी एक रास्ता बन जाता है, ऐसे ही. और बाकी इसको फिर मेनली हम अलग अलग करके इतना ढंग से हम समझते हैं कि कुछ तो गुड, कुछ बैड. Whatever vibrations are created by the movement of the touch of the wind, say prana, in the brain cells, mainly it is divided into two. One is good, other is bad. And those thoughts which are taken in good class, they are called Daivi Sampats. Similar thoughts, they will be called divine thoughts or good thoughts, and other part will be bad thoughts, means they are harmful. In that way, somehow or other, the brain functions. But it is so subtle, nobody can exactly say anything. So subtle. Prana also is so subtle, and those cells are so subtle and they vibrate in that way, and those vibrations are called thought waves. So how many kinds of thought waves will be created? And when we completely stop the breathing system, do complete kumbhak for a long time, then
brain function also stops after a long time, not easily. And at that time also our physical heart stops and the spiritual heart never stops. Spiritual heart means awareness. Awareness is always there, but all these functionaries, they take rest. Prana also can take rest by force, not automatically. Mind can take rest by at the time of sleep, deep sleep. And body, of course, takes rest every now and then. In this way, we can see our functioning process, and one who does all these actions for everyone and one who has relation with everyone in this world, he is praiseworthy and he is called a large-hearted person. Whether it is large-hearted or large-minded, we are not going to How does attunement find attunement? tuning. Attunement. Yes. How does it work? Like you are attuned to someone, and you can actually, he is like what he thinks, you can also think, or he can pass. Like if you are related to someone closely, you feel even if he is not in the same place, you sort of have the same whatever. Tuning. Yeah, some sort. Like you catch the signal. जी वो हमारा ये टीवी कैसे ट्यूनिंग करता है और हमारे वो जो रेडियो ट्रांजिस्टर सब था और ये कंप्यूटर कैसे करते हैं. You say tuning means एक formula is there. A formula is there. Formula is so simple formula, which is applicable everywhere. There is a relation between similars. Relationship is seen in the similar objects or similar functions. So similarity is not 100%. Never it can be. Little, somewhat similarity. So this formula is applied everywhere. Our relations, we have sometimes, we have more deep relation with some people and less relation with some others. In that way, you see, repetition of any action or any happenings that makes the object or subject or the action gross and more visible and more relationable. More relation can be with gross things. And subtle things, of course, subtle things will have subtle relationship. And as more subtle it will become, so wide it will become. The subtle most are more widened and more expansive. They are more expanded. So in this way, you see, actually, if we go to such subtle analysis, it is very difficult to.
it may be understood, but to express it, it is so difficult. No language can explain it. Relationship we have with everyone is related with everyone. And that is subtle also, gross also. And we behave in gross field. All our life transactions, we do everything in a gross way. And few among us who are more thoughtful, more, you see, intellectual, they use their intellect, they go to the matter deeper and deeper, they see more subtle things. And generally, in one word, if we say, everything is clumsy and confusing. One word, it is enough to give answer to all your questions. Nothing is clear. Why not? Because everything is related with everything in. Huh? Yes. You see, when there is a storm in the ocean, can you say which wave is clashing with, dashing with which wave and how it is reacting? Can you say something? The world is like that. And basically, finally, world is nothing but our action, our reaction, our whole universe together with all the subtle managements and gross managements, gross beings and subtle beings, whatever is there or not there, everything is nothing but a vibratory system, a say imbalanced system. Basically and finally we can come to this much conclusion. It is a vibratory or it is a, you see, imbalanced system. So how can we have any conclusion which is imbalanced? When you are riding a cycle, you have lost your balance. So how can I say where will you fall down? Or where you can come down from the cycle? Nothing can be said. But one thing we can take for granted, that unless everybody of the whole totality take part, nothing is possible. That's how it is so complicated and so confusing. Swamiji, scientists have measured the electromagnetic vibration of the head and the heart, and they have found out that the vibration of the heart is 60 times more powerful. 50 times? 60 times more powerful than the vibration of the brain. जी, वही हम बिना देखे भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हृदय सबसे सटल मोस्ट है. तो सटल मोस्ट जितना होगा, आज सटल it becomes so powerful and so expressive or expansive it will become. See, just as a piece of ice takes less place, less area, and water and vapor takes more area because it will subtler than the gross
eyes peace. So we see when the objects are subtle and subtler and more subtle, then they must be more voluminous and more expansive. They are more powerful also. And that's how our gods are more powerful than gross beings, say human beings or animals. Gods are subtler beings, so they are more powerful. And though they have more, you see, क्या कह सकते हैं जो they have more पहुंच को क्या कहे, yes, they can do more perfectly, more elaborately and more powerfully than the human beings. यही तो हम देख रहे हैं, जैसे इसीलिए इतना समझने के लिए इतना कठिन हो रहा है। समझना हमारा मन बुद्धि जो हम काम करते हैं वो साधारण ग्रॉस फील्ड में काम करते हैं। तो हृदय तो सबसे अणुरणीयान कह करके बताया, तो अणुरणीयान कहने से सबसे पावरफुल और वही तो परमात्मा का स्थान कहा, तो फिर ये तो ब्रेन तो कुछ नहीं है। अब जो कुछ एक now have some rough and tough ideas, that's all. Nothing can be clearly decided. इसको क्यों हम हमेशा ऐसा करके छोड़ देते हैं, अरे यार ये संसार नहीं है करके फाइनली बोलना पड़ता है। The world is not there, we are trying to understand which is not there. This is the mistake we are doing since beginning itself. We are trying to understand something which is not there. So what will be the conclusion? What will you understand? That's why we are always coming to the conclusion. Everything is clumsy, confusive, elusive, nothing is clear. When we go to minute analysis, then it appears like that. That means we are in a right path. Our analysis is right, because it is basically the whole world is nothing but a system, vibratory system, play of energy, that's all. If this is the principle, basic principle, then how can you have any correct and perfect decisions? How can you? इसी प्रकार विशाल हृदय वाला जो व्यक्ति होता है वो सारे संसार के लिए अपना मानता है और सबके लिए कर्म करता है। कर्म ही मनुष्य का मापदंड है। कर्म से हम सारे सारे व्यक्ति को हम मापते हैं और कर्म ही एक व्यक्ति को महान अथवा नीच बनाता है। कर्म से ही आदमी बड़ा बनता है और कर्म से ही आदमी छोटा बनता है। और कर्म करने के लिए सारा व्यक्तित्व
इकट्ठा होने से कर्म होगा, जिसमें कभी कभी ज़्यादा जो मस्तिष्क काम करता है और कभी हृदय काम करता है। हृदय में, और हम जो एक बात विचार कर रहे थे, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, इंट्यूशन बहुत जो those minutest waves which are created, and once it is created they have to go on spreading, means expressing, means projecting out. So the minutest waves are called intuition. And in Sanskrit we have name many types of names according to its function. We name it as medha, pragya, or बुद्धि, बुद्धि थोड़ा ग्रस हो जाता है, प्रज्ञा, मेधा, धारणा, धृति इत्यादि इत्यादि शब्दों से हम कहते हैं उसको। बहुत बारीक जो हृदय का स्पंदन है, और उसके बाद जब मोटा थोड़ा हो जाएगा, एक्सप्रेस हो करके मतलब फैल गया है, तब फिर मस्तिष्क में जा करके, जैसे हम कहते हैं ना वो चक्र इत्यादि जब विचार करते हैं, चक्र में सहस्रार चक्र को कहते हैं मस्तिष्क में। सहस्रार मतलब ये इतने कलमजी और इतने फैला हुआ है और इतने बारीक हैं, इसलिए उसको सहस्रार, सहस्र दल कमल करके बोला गया। उसका मतलब कुछ एग्जैक्टली वो अच्छा नहीं है, उसको खाली उसका भाव ये है कि ये क्लमजी है, कन्फ्यूजिव है, इतने सहस्र दल कहना मतलब। जैसे हम सहस्र नाम उच्चारण करते हैं, सहस्र नाम मतलब उतना ही भगवान का नाम ऐसा नहीं मानना। जितनी नाम है, हजारों लाखों नाम, सब सब उसका भगवान का है करके मान लेना चाहिए। सहस्र नाम तभी कहते हैं। ऐसे सहस्र दल कमल जो कहते हैं, उसका मतलब इट इज सो क्लमजी एंड सो कंफ्यूजिव। 1000 petal lotus is there in the last center. 1000 petal lotus means it is so clumsy and so expressive. Every moment, everything is being expressed. और चित्त कहाँ है? बता, चित्त का जगह कहाँ होगा? सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वो उसका जगह कहाँ होगा, ऐसा कोई कभी स्पष्ट रूप से कहीं किसी का कहा नहीं गया, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म है। तो चित्त को चित्त के साथ जोड़ दो। चित्त मतलब अवेयरनेस, तो चित्त भी पहले चित्त मीन्स द अवेयरनेस which is absolute equilibrium, and when it is little vibrated, it is called the energy, which starts means it will go on spreading all over. So that is called energy, and that is of 3 types. Sattva, Rajas, Tamas, we call it 3 qualities. And it will not be in one plane, in all directions it will be vibrating, and then
You see, chitta means the functionary part of the energy. When the energy means it has to function because it is a unsteady vibratory system. So chitta means all those subtle impressions of the vibrations collected in a way that is called chitta, subconscious mind. So how to understand it? So impression is also a wave. Yes, all the waves and impressions of the waves are collected together. That is, Also, it's the mind wave. yes, yes. So that is called the universal mind, and our individual mind will be, means chitta will be a part of it, limited part. So understand however you will can. Chitta is nothing but the impressions of the every system. Impressions of Shakti, impressions of movement. Ji, impressions of the whole wave. Whatever waves are being created and it is going on, spreading or expanding, that impressions are collected together. And that's how it is not collected in one space or time or in any condition. It is spread all over. If you say chit is all pervasiveness, so chitta also will be all pervasive. That is called the universal mind. And individual, of course, as you think, it is limited in a sense. जिसमें सारा इम्प्रेशन रहेगा, इस प्रकार समझो. कैसे मालूम? और भी थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं. Chit without impression is This is called Paramatma, and Paramatma, Chit, awareness, and Chitta also is here. This is Chitta, this is Chitta. The impressions are within it. And when it is little visible, then only it is named as such. Or else there is no difference between chitta and chit. Word-wise, word chitta and word chit, they have this much difference only. When the chit start activating, means in motion, then it is called chitta. The total vasanas reside in Narayana, they say. So how to understand that? The total vasanas reside in Narayana, that's how they say, right? Narayan. Is that how to relate to this? Is that the same chitta? अरे प्रश्न अगर आधा अधूरा है तो उत्तर भी ऐसे ही आधा अधूरा होगा. आप एक सेंटेंस को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो. प्रश्न का एक सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो. पूरा तो करो. क्या है प्रश्न? No, like all the vasanas reside in Narayana. That's how we, at least I mean, I've heard. So is that the same chitta residing in chitta? कुछ नहीं समझा मैं. I'll clarify it. नारायण का डिफिनीशन ये चाहते हो? No, the vasanas is
chitta, like that where vasanas reside. कुछ कुछ ऐसे ही समझ लो। और क्या कहेगा? वासना, वासना जो है वो कभी ऐसा लगता है कि वासना का जो व्यवहार किया गया शास्त्रों में, वासना जो देश काल से परे है, देश काल के अधीन नहीं। अच्छा, और परंतु गतिशील है, स्थिर नहीं। इसीलिए स्थिरता को अगर सबके परे लेकर के परमात्मा का रूप देते हैं तो आइडिया क्या होगा? जैसे मान लो, इसको समझो, अपने ऊपर लो। मैं हूँ, सोया हुआ हूँ, सोया हुआ तो मैं तो हूँ ना, मेरे को मालूम है कि मैं हूँ। और जब उठना चाहता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ और मैं उठना चाहता हूँ, मैं कितने अंतर है। और मैं मुझे जानता हूँ, ये सब भावना में कितने अंतर है बताओ? कोई बोल सकते हो कुछ? मैं तो हूँ, सोया था, सोया मैं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा भी उसके बाद ये फीलिंग आया, मुझे ये मालूम हुआ, हाँ मैं सोया हूँ। और उसके साथ साथ मैं मतलब ये सारा शरीर मैं हूँ। और उसके साथ साथ एक भावना आता है कि मैं उठूँगा, मैं अभी जग गया हूँ। ये जो इतनी सारे भावनाएं हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, कितने अंतर, कैसे समझेंगे? That awareness in deep sleep, which is just a little covered by the awareness of the body or I or the ego, they're so identical, it is very difficult to differentiate. My awareness and myness, what difference is there? भेद देख रहे हो, समझ रहे हो? मेरा होना और मेरा होने का मैं अनुभव करना, कितनी अंतर तो जरूर है, लेकिन कैसे इसको अलग करके दिखाओगे? हैं? Deep sleep to dream state and then back and waking. ड्रीम तो बहुत ग्रस हो गया। जब सोया हुआ हूँ मैं, उस समय मैं हूँ जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी सोया हुआ अवस्था में कोई बुला दिया और उसको मैं सुन लिया। वो कौन सुनता है? हैं? कौन सुना? कैसे, क्या फीलिंग हुआ? कोई बुलाया, अरे स्वामी जी कहाँ हो? मैं सुन लिया वो शब्द को, तो कौन सुना? वो आइडेंटिटी और जो सोया था नहीं सुन रहा था, वो आइडेंटिटी में क्या अंतर है बताओ? है ना नहीं अंतर? जो नहीं सुना था और जो सुन रहा है, और वो सुनने में भी कितने अंतर हैं। कोई सुन करके रिएक्ट करता है साथ साथ, और कोई नहीं करता है, अनसुना कर देता है। कितने बारीकी अंतर उसमें सब होता है। तो इसी प्रकार ये जो चित्त और परमात्मा या जो
सृष्टिकर्ता और जो परमात्मा उसमें अंतर इतनी कम है कि उसको समझना एग्जैक्टली अलग करके दिखाना यह असंभव है। इतने खाली बोलने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है। अहम को ब्रह्मा मान लिया जो सृष्टिकर्ता हो गया। द ईगो इज नोन एज ब्रह्मा द क्रिएटर। And is the ego different from your identity? Huh? But it is seen or taken as different from each other. Ego not expressed and expressed. There is difference. मैं इधर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ और उठने के लिए सोचा, खड़ा होने के लिए सोचा, इसमें क्या अंतर है? अंतर तो जरूर है। निश्चेष्ट बैठा हूँ और चेष्टा मन में कर रहा हूँ कि हाँ उठूंगा। कितनी बारीक अंतर है, लेकिन अंतर तो है। ये प्रोसेस इसी प्रकार है। प्रोसेस में अलग अलग फेज में हम किसी को कैसे नामकरण करके कुछ कुछ बोलते हैं। इसीलिए कहा गया ये सारे भाषा जो है, शब्द जाल जो है संसार में, जिससे हम जिसके माध्यम से हम व्यवहार करते हैं, जीवन जीते हैं, सारे ऐसे ही निरर्थक सब। किसी में कोई सफाई नहीं है। अगर निरपेक्ष भाव से हम अगर बात करेंगे, कहीं सफाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं साफ। और ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से तो मेरे को वो सारा मालूम है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना सब है, मैं इतना जानता हूँ, ये सब कहना तो आसानी है। लेकिन सच्चाई अगर निरपेक्ष भाव से बताएंगे तो ना कुछ दिमाग कुछ समझ सकता है, ना कुछ क्लैरिटी है कहीं। इतनी बारीकी ये प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस। स्वामी जी, rather than using the gross mind, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड से समझने की कोशिश करें तो बेहतर नहीं होगा? थोड़ा आसान नहीं होगा? इसको हम कुछ आइडिया को अनुभव कर सकते हैं जब पूरा कभी बाई चांस मन स्थिर हो जाता है और उस समय तो एक अलग स्थिति। लेकिन जब वो स्थिरता अस्थिरता में बदलता है, ध्यान से हम मानसिक स्थिति में आते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ कुछ समझे में आया, जिसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। समझ में तो आता है, लेकिन भाषा नहीं बोलने के लिए क्या करें। दिख रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ का नहीं। वो चंद्रमा आया था ना, कहेंगे जी चंद्रमा, ये कोई सरदार जी जा रहे थे कहीं, वो पूछे आसमान में कुछ दिख रहा है, ये सूरज है या चंद्रमा है? तो दूसरे आदमी को पूछा ये क्या चीज है, सूरज है या चंद्रमा है? पूछा सरदार जी। दूसरा सरदार जी कह रहा है मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ, यहाँ का नहीं, मैं कैसे बोलूँ? तो ऐसे ही ऐसे ही क्या बोले इसके ऊपर। Just like a छोटा बच्चा doesn't know the language, you know, maybe he sees it. जी ऐसे ही जो बोल नहीं पाता है वो बोलना चाहता है। अच्छा, तो इस प्रकार विवेक की जानकारी, हम विवेक को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, है? ये सारा जो एनालिसिस, व्हाटएवर एनालिसिस वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग आवर
discriminative power only, finding out the differences between two status or two states of our understanding. So this is how a man of discrimination will behave. His behavior will be so wide and so 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 universal. He will do everything for everyone. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Let the whole universe be happy. That way he can pray. He will never say, hey, oh Lord, please give me a child. My family is ruined. He will never think of himself. He will think for the whole universe. He will do for the whole universe. And he will have relation with the whole universe. Sarva bhuta hite rata. He will be doing everything for all the beings of the whole world. That is the greatness of the discriminative person. Swamiji, is it necessary with discrimination, bhakti also comes automatically, or they are not necessarily correlated? ये सब इकट्ठा सोचो. सबको इकट्ठा सोचो. स्वामी जी, ये महात्मा कबीर जी ने कहा था कि ये 16 अरब की शब्द हमने प्रकट किए हैं ग्रंथों में. क्या? कबीर जी ने कहा था कि 16 अरब शब्द कहे हैं, शब्द 16 अरब व्याख्या करी है, पर वो सार शब्द जो है वो बाहर नहीं आया. जो सार शब्द तुमने बोला नहीं समझा नहीं. और क्या? 16 अरब शब्दों की व्याख्या करी उन्होंने. 16 अरब करोड़ ऐसा लिखा शास्त्र में. 16 अरब क्या? शब्द शब्द जो शब्द. अच्छा, शब्द. हाँ, ये शब्द जाल जो बड़ा दुख का कारण है, वो हमारी बुद्धि को शब्द जाल से ऊपर ही नहीं उठती है. जी जी जी. तो ये और उसको कहीं कहीं ये बताया गया कि जो जो हृदय का स्पंदन होता है वो स्पंदन दिमाग में आकर के, जो मस्तिष्क में आकर के जब प्रकट होता है, भाषा का रूप एक लेता है, उसके पहले कितने स्तर को पार करके जाना पड़ता है. अलग अलग लेवल को पार करके जाना पड़ता है. उसी को तो हम उदाहरण दे रहे हैं. जैसे सुबह का अंधकार मिटना और प्रकाश आना, ऐसे ही इतनी माइन्यूट है वो, उसको बोलना तो मुश्किल है, परंतु 4 फेज में बताया गया. वो 4 फेज, 3 फेज तो वो अंदर अंदर की बात है, और एक फेज जो ग्रॉस फेज है वो बाहर सुनाई देता है, जिसको हम सुन करके कुछ अर्थ के साथ जोड़ते हैं, व्यवहार में लेते हैं. और जो सुनाई नहीं पड़ता है उसको जो
ज्ञानी लोग उनको सुनाई पड़ता है, वो देखते हैं, उसके वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते भी हैं। अति सूक्ष्म जो स्तर में है वो व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार जैसे अभी मैं कर रहा था, हमारा व्यवहार सब ग्रॉस लेवल में होता है, इसलिए हमको अंदर की बातें सब ना समझ में आता है, ना उसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन सबके अंदर वो तो है ही, क्योंकि हृदय तो सबका एक ही है। अगर अणुरणियान लेंगे तो सबका तो सेंटर एक ही है, परमात्मा है। और वो जब विस्तार को प्राप्त होता है उसमें तभी तो हम एक देश काल स्थिति को हम समझते हैं और सीमांकन करते हैं। तभी इसको सब बस एक ही करो, मन को चुप करो और समझो, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मन को चुप कर लो और उसमें जो देखेंगे फिर हमको बताओ। हाँ, when you go to the space, to the neutral zone, and if you see something, please tell us whether it is day or night. How much visibility and how much invisibility you have there. Go there and then tell us. मन को चुप करना मतलब विचार रहित हो जाना। विचार रहित होने से सारे कुछ दिखता है। जैसे ईश्वर का विचार या परमात्मा का कुछ नहीं, ना कोई भगवान ना उसका बाप, कोई नहीं इधर इधर। करने से भी चुप हो जाता कि जैसे जो कुछ कह रहा है, कुछ वो ठीक कह रहा है, उसको स्वीकार करने पर सरकार के मामले रहे। बिल्कुल अवशेष जिसको कहा, मतलब भगवान शब्द भी उधर नहीं है, शब्द के परे है तो भगवान तो एक शब्द है, भगवान उस शब्द का नौकर है। उसके परे जहाँ कुछ नहीं है, कहा ना बोले वो घर सबसे न्यारा, नाम रूप को छोड़ना है। नाम रूप कुछ नहीं, जहाँ नाम रूप नहीं है तो फिर शब्द कहाँ से आएगा, समय नहीं जहाँ तो फिर बदलाव कहाँ से आएगा, परम स्थिर को कैसे हम बोलेंगे, कौन सा भाषा से बोला जाएगा, सारे भाषाओं से परे जब कहा गया। मतलब निर्विचार और मन रहित हो जाना ही परमात्मा का स्मरण और ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिरता का नाम परमात्मा। बस कितने बार हम बोल रहे हैं उसी को। ये कंसेप्ट इतना जटिल है ना कि आसानी से बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि बुद्धि चंचल है ना, हमारा आदत पड़ा हुआ है। हाँ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, दैट इज द होल ट्रबल। The moment you give up understanding, you will understand everything. That is the whole trouble. We want to, and that is what I was telling. We want to express something which is beyond expression. Understand something which is beyond understanding. There is nothing to understand. But because of our habits, because of our so-called clumsy, dark identity is intensified, we can say.
that is not able to melt, yet it is keeping up some identity. I want to understand it. I want to go beyond understanding. I want to go beyond understanding. This is also a gross, serious mistake. There is no I not to go anywhere, not to understand, or to misunderstand, nothing. Just keep quiet. That is impossible. And that happens sometimes. If you reject all these, if you are able to reject, then that happens sometimes. All these are useless. That is what we are discussing, dispassion towards the worldly objects and behavior, whatever transaction we are doing, whatever we are thinking, whatever speaking or trying to understand or giving or taking, all these are useless, meaningless. If this meaninglessness is accepted and it is somehow or other, meaninglessness is understood and accepted, then a state comes by itself. That is the eminence, that is the absolute balanced state. It is not possible by trial. No. कोई पुरुषार्थ में इसको प्राप्त नहीं करता है. ये होता है ऐसा. जब हम इसको छोड़ देंगे तब वो स्थिति होगा. इसीलिए कहा गया त्यागात शांतिरनंतरम. The moment you renounce all these, and that's how we have given emphasis to vairag, dispassion. Dispassion is the seed. We have to go on rejecting all these. That's how the Vedas has explained it by negating process. Not this, not this, not this. That is the best way of our expression. Whatever remains in the end, no words can explain it. So how can you expect something to understand? Just keep quiet. स्वामी पर पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना. करो. यही तो हम विचार कर रहे हैं कि विचार यही कर रहे हैं कि विचार करना के परे है ये. विचार जहाँ खत्म हो जाता है, ये हम विचार कर रहे हैं कि विचार नहीं करना है. यही हमारा विचार होना चाहिए. जो नहीं करना उसी को हम करना चाहते हैं. क्या करें? जो नहीं दिखता उसी को हम देखना चाहते हैं. तो इतने साधारण चीज़ हम समझ जाना चाहिए. वो 3-4 बच्चे ठंडी में कमल ओढ़ के सोए हैं. मेरा भैया उसमें सोया है, छोटा भैया. मैं उसको कैसे देखूं? उसी का हम विचार कर रहे थे कि जो एब्सेंटी है क्लास में,
when we search for the absent boy, what do we do? Or when we are searching for some boy who is sleeping with other boys, covering all the blankets and everything, not visible. We want to see him. We want to see the invisible. What to do? What is the way? To remove the covering. That is the way. Covering means our ignorance. Ignorance means imbalanced state, which is known as confusion or illusion. That is called ignorance. And that should be given up. So automatically there will be a state of balance. So this is the way, that's how the Vedas declare it by not this, negating process. That's how. This is the only way we can express something. And if you say this is like this, that is wrong. If you say this is like this, then you have to accept everything. Is there any number, any limit to everything? Negation is easy, easier than affirmation, isn't it? There is no end to acceptance, but there is end to rejection. There is end. That's how neti neti kahi ved pukara. By negating process only the Vedas has given in the end what is the truth. जैसे भी होगा अभी महानता, महिमा, विशाल हृदयता अथवा उदार चित्त, उदार चित्त जो विवेकी जनों का हृदय कैसे उदारता से भरा हुआ रहता है, उसी का हम विचार कर रहे हैं। औदार्य के सर्वश्रेष्ठ अवधिभूत सीमा और गांभीर्य गुणों से अति शून्य महात्माओं के बुद्धि को 14 भुवन तथा उनके सभी प्राणी एवं वहाँ के सारी संपत्तियाँ भी लुब्ध नहीं कर सकता है। ये नेगेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है, हम तो कह रहे हैं वो सारा संसार के लिए सोचता है, सारा संसार उसका परिवार है, और ये कह रहा है कि सारे संसार उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। We are discussing, he thinks for the whole universe. A man of discrimination, he has nothing of his own, he does everything for the whole universe. The opposite language is also, the whole universe cannot attract him, nor it can have any attraction towards the whole universe. That is good for nothing. यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। इसी को हम समझने के लिए चित्त की भ्रांति, क्या चित्त कुछ सही चीज है जिसकी भ्रांति हो जाएगा? है
जो भ्रांति को देखता है वो कौन सा सही है? देखो, एक फॉर्मूला याद रखना, जो आलोक में बैठा है वो अंधकार में रखा हुआ चीज़ों को नहीं देख सकता है, कभी कभी नहीं देख सकता है। और जो अंधकार में है वो देख सकता है। अंधकार में जो है वो आलोक को देख सकता है, पर आलोक में जो है वो अंधकार को नहीं देख सकता है। कभी अनुभव किए हैं? अंधकार आलोक को नहीं देख सकता है, देख सकता है, देख सकता है, आलोक अंधकार को नहीं देख सकता। इसी प्रकार हम जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चित्त की भ्रांति है, उसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जो अंधकार है वो हमेशा अंधकार ही है। चित्त भी तो एक भ्रांति का नाम है, और जो भ्रांति है वो चित्त का है। कहने का मतलब क्या होता है? वो जो कपड़ा है ना, धागा का है। ये कहने का क्या अर्थ हुआ? वो कपड़ा अब जो पहन के वो धागा से बना हुआ है। जैसे कपड़ा होगा वो धागा से ही तो बनता है। कपड़ा धागा का हो या धागा कपड़ा का हो, एक ही बात है। तो ये सारा संसार चित्त का भ्रांति है, मतलब चित्त ही भ्रम का एक घर है, और संसार भी भ्रम का एक घर है। विवेकवान जी, विवेकवान पुरुष ही ऐसे ही देखता है संसार को। और ऐसी सज्जनों को दृढ़ भ्रांत प्रतीति हो जाने पर बाहर शब्दादि विषयों के लिए उत्पन्न होने वाला तथा भीतर संकल्प विकल्प आदि रूपों से भ्रमण करने वाला अतएव हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थ मन सहित इंद्रियों का समूह रूपी एक तरह का नक्र तथा उसका मूलभूत ज्ञान एवं वासना काम कर्म आदि ये सब के सब शांत हो जाते हैं। इसी को अभी हम बात कर रहे थे, इसको कल फिर बात करेंगे। ये जो कैसे मन शांत होता है इसके बारे में कह रहा है। विवेक का मन कैसे शांत होता है, चुप कैसे हो जाएगा? व्हाट इज द वे टू कीप क्वाइट? And generally, a man of discrimination gets that state of mind. How it happens? Just as now we were discussing, we are trying to understand which is beyond understanding. We try to understand that. We want to see what is always invisible. We try to measure which is immeasurable. All these we do. When we understand our effort is meaningless, then only we can have effortless. Understood? The moment we understand and accept our efforts are meaningless, useless, then only we can
keep quiet without any effort. That should be understood and accepted. Then only one can keep quiet, and this state is indicated by negating process of Vedas. Why the Vedas negate everything? Your trial to do something for yourself or for somebody, for the whole universe or for your individual being. All your actions are meaningless and useless. When that is understood and accepted, then only you will be enacting. Or else till then you will be going on doing something. Oh, I am doing good to others. I am doing so and so. I want to do this and do that. All these will stop only when you understand doing itself is useless, meaningless. Whether it is good or bad, that is not taken into consideration. Good and bad, both you have to renounce. First of all, we were trying to neutralize the bads into good. First of all, we have to give up bad, replacing the good instead of bad. Now everything has become turned good. Now this has to be renounced also. This will be given up only when you know all these are also meaningless. Tomorrow we shall see. ये जो एक शून्य काल कैसे आता है, शून्य कैसे होगा, और यही है असली ध्यान का स्थिति, जिसको कहते हैं हम अवशेष ही परमात्मा। हम तो कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने के लिए ना, वी आर ट्राइंग टू मेडिटेट, isn't it? This is our concept. We try to meditate, but meditation is not the result of your trial. As long as you will try to meditate, so long you will fail to meditate. It happens, it comes by itself. इसी को हम दूसरे भाषा में भी कहते हैं भगवत कृपा, जिसका, और इसी को भी हम कहते हैं ओ लॉर्ड दाई विल बी डन, इट इज हिज विल। तो इसको कल फिर देखेंगे, ये और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में ले जा रहा है हमको। ये विवेक जन का महिमा गान करना, ये तो बड़ा मुश्किल बात है भाई। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है कैसे हमको शून्य काल कैसे मिलेगा, शून्य स्थिति कैसे मिलेगा। और इसी को बुद्धदेव जो छोड़ दिए थे कुछ नहीं करके, उसको नास्तिकवाद बोले कहते हैं, ये कुछ नहीं कहा, ये तो नास्तिक है। अरे यार हम भी अभी क्या कर रहे हैं, हम तो नास्तिक, कोई भगवान को हम मानते ही क्या। जब भगवान को माँ बहन का गाली दे रहे हैं तो फिर कहाँ मानते हैं हम उनको। नास्तिक तो होते हैं, नास्तिक मतलब असली आस्तिक।
सबको जो मानता है वही तो सबको त्याग कर सकता है। कल देखेंगे, फिर लगाएंगे गोता। ये शून्य काल कैसे आएगा? विवेकी जनों को ये स्थिति कैसा मिलता है? उन हाउ डू the discriminative people feel and how do they behave, means how do they get that state of equilibrium? Their state of being is something very strange. They are not just as worldly people. Of course, first point we saw, if at all they work something, do something, it will be for the whole universe. Now, they don't do anything, they keep quiet. That is their state. They never do anything, because doing is called world. And they see what is world and what is beyond it. Both sides they see. That's how they are called discriminative people. This side and that side. Tomorrow we shall see it still more elaborately. What happens to such people? Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavaseshyate. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्दा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जय सिद्ध जी भगवान की जय। जब तक चुप नहीं हुए